My throat is not working properly. As I've told you, after the puja, I'll start the class. So, as for the promise, the class is there. So, as per the request of the students, the class of the day is none other than the portrait of a lady. Invitation to English 1. The portrait of a lady aji पढ़िबा पिले आमे हमरो invitation to English 1 रो गोटे prose तो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी पोर्ट्रेट कहले कौन पिले व्हाट डू मीन बाय पोर्ट्रेट सो पोर्ट्रेट कैन बी यूज फॉर ए फोटोग्राफ इट कैन बी यूज फॉर ए पिक्चर इट कैन बी यूज फॉर ए ड्राइंग तो ये पोर्ट्रेट कहले नॉर्मली गोटे छवि विषय कह जाए पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी गोटे लेडी कहले भद्र महिला आम समस्त जानी सो द राइटर इज खुशवंत सिंह किए खुशवंत सिंह होती राइटर and Khushwant Singh is a prolific Indian writer जड़े विशिष्ट भारतीय इंग्राजी भाषार लेखक एकाधार से जड़े कलमिस्ट कलमिस्ट स्टैंड फॉर द पीपल और द राइटर हु रोट कलम नॉर्मली कलम कहले जो मैंने न्यूज आर्टिकल रे कलम सब लिखते स्तंभकार बोली कह जाए जदि शुद्ध ओडिया को हम जीवा स्तंभकार बोली कह जाए कलमिस्ट also in Indian literature history his name is taken with honor as one of the eminent novelist and historian of English literature भारतीय इंग्राजी भाषा जो केतेक माने लेखक अच्छा सुनामधन्य लेखक से मध्य यहाँ को काउंट करा जाए गणा जाए जड़े गण्यमान्य कवि मध्य किए खुशवंत सिंह तो पिले मुथर इंट्रोडक्शन को विशद भाव में जाऊनी कारण ए वर्ष एमसीक्यू नहीं आम समस्त जानीचे वी आर टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट आमको टेक्सटा बुझीबार अच्छी एंड आमे विथ द टेक्स्ट आमे से सेंटेंस रे कौन प्रश्न हो पार व्हाट एवर क्वेश्चन विल बी देयर इफ देयर विल बी एनी क्वेश्चन से जिनस भी आमे माने देखा आलोचना करवा तो पढ़ी पढ़ी जीवा प्रश्न आलोचना करी जीवा गोटे थरे पाठ सरीब आमे पूरा बुझीबा ठीक अच्छे पिले सो लेट मी स्टार्ट द क्लास द क्लास इज लाइक दिस वार्म अप सेक्शन को मुझे जाऊनी ना माय ग्रैंडमदर मोर जेजेमा हैं लाइक एवरीबडीज ग्रैंडमदर प्रत्येक लोकंकर जमती जेजेमा थांती से भाया आ जेजेमा माने नॉर्मली केमती थांती पिले बुढ़ी की थांती नहीं सो व्हाट हैपेंस देन लाइक एवरीबडीज ग्रैंडमदर वाज एन ओल्ड वुमन जड़े वृद्ध महिला जमी समस्तंकर जेजेमा वृद्ध होइकी थांती वृद्ध महिला होती समस्तंकर माने चुटी पाचि जाए चमड़ा सब धुड़धुड़ होइकी थाए से भाया जमती थांती से भाया मोर जेजेमा मध्य जड़े ओल्ड लेडी ओके शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled for the 20 years that I had known her. She had been old and wrinkled. Old कहले वृद्ध, wrinkled कहले चमड़ा धुड़धुड़ हवा पिले चमड़ा धुड़धुड़ हवा. So she had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. एटी गोटे प्रश्न हो पारे. So according to the writer, how was his grandmother? किभली थिला? She was old and wrinkled. केमती थिला? She was old and wrinkled. नहीं बिले. So I had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. मु दीर्घ 20 वर्ष हैला past 20 years that I had known her. तार अर्थ कौन जे जो 20 वर्ष है मत 20 वर्ष है 20 वर्ष है जानूली आ 20 वर्ष है से जमती थिला सेमती ही अच्छे 20 वर्ष है से जमती थिला सेमती ही अच्छी दैट आई हैड नोन हर पीपल सेड लोक माने कहते कहते से समय पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेडी लोक माने कहते मत भी कौन बोली कहते दैट सी हैड वंस गोटे समय थिला सी हैड बीन यंग एंड प्रेटी से एक सुंदरी तरुणी थिला सुंदरी स्त्री थिला यंग एंड प्रेटी कहले अट्रैक्टिव
सो से सुंदरी थिला आकर्षणीय भी थिला यस सर सो यंग एंड फ्रेडी एंड हैड इवन हैड ए हजबैंड हैड दीटा हैड लगी गोटे हैड हूँ पॉजिटिव केस आ गोटे हैड हूँ वर्बर V3 फॉर्म बुझेगा हैड इवन इफ ए हजबैंड तार गोटे स्वामी भी थिला से बाहा भी होते हैं लोक कहते कथा मु तो जानी मुझे जन्म हेली मो जेजे बापा नथिले तो लोक कहते कौन कहती दैट सी हैड इवन ए हजबैंड तार जन स्वामी भी थिले बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव एक कथा विश्वास योग्य लागू नथिला नो शुभम डोंट आस्क हियर या देयर विल बी अ स्पेशल लाइव क्लास ऑन +3 एडमिशन एंड स्कॉलरशिप एट 8:45 8:45 रे +3 पिला मानक पई मु लाइव करिवि आउ सेठी तुम पचारि क्वेश्चन ठीक सो had even had a husband but that was hard to believe से कथा हजम हो नथिला विश्वास करी हो नथिला हैं ओके वर्तमान जीवा टिके ग्रैंडफादर पार्ट को एटा थिला ग्रैंडमदर का विषय रे वर्तमान जीवा ग्रैंडफादर का पार्ट माय ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग above the mantelpiece in the drawing room my grandfather's portrait कहले छवि मु आगु कहि सारिछि my grandfather कहले जेजे बापा तो my grandfather's portrait hung कहले झुलुतला hang ru hung हेछि so hung above the mantelpiece कोठी mantelpiece कहले self mantelpiece कहले self mantelpiece कहले सेल्फ ए सेल्फ यू कैन से शेल्फ इट इज सो सेल्फ कोठी झुलुला ना सेल्फ ऊपर सेल्फ गोटे सेल्फ रखाइला ड्राइंग रूम रे आउ ता ऊपर मो जेजे बाबांकर कौन थिला फोटो थिला ठीक अछि कौन थिला जेजे बाबांकर फोटो थिला मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम कोठी ड्राइंग रूम अच्छा जेजे बाबा केवल थिले देखिबा पिले सो वेयर वाज हिज ग्रैंडफादर्स फोटो or portrait here there may be a question तो ये जगह हम कहिबा his grandfather's portrait was over the mantelpiece over the shelf right so he wore a big turban and loose fitting clothes मोर जेजे बापा केमती ड्रेस पिंदिथिले बेले big turban कहले पगड़ी turban stand for yes turban कहले पगड़ी हैं so ही ओर बिग टर्बान बड़ गोटे टोपी से जो फोटो थिला से फोटो रे से कौन पिंधले गोटे बड़ टोपी पिंधले ठीक एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स ढिला पंजाबी माने नॉर्मली ढिला पिंधंती बिले हम जानतिबा जोशी वेलकम टू द क्लास सो पंजाबी माने केमती ढिला पैजामा पिंधंती नॉर्मली पंजाब रो लोक तो खुशवंत सिंह भी पंजाब रो लोक थिले तो से वाला ड्रेस माने लूज फिटिंग क्लोथ्स पगड़ी पिंधले अच्छा loose fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest and it looked at least 100 years old. His long white beard. तांकर माने धड़ा हेकरी लंबा दाढ़ी थिला कहार who had long white beard his grandfather खुशवंत सिंह grandfather तांकर कौन थिला long white beard then cover the best part of his chest cover the best part of his chest तांकर जो छाती रो माने अर्धाधिक भाग जोटा माने देखा जीवा कथा पूरा कवर हेकी थिला छातीटा पूरा कवर हेकी थिला बेस्ट पार्ट कहले द लार्जर पोर्शन यू कैन सी सो बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट वाज कवर्ड विथ हिज लॉन्ग व्हाइट beard बुझे and he looked at least 100 years old आउ से फोटो को देखले लागुतला कोन लागुतला he looked at least 100 years old कम से कम तांको 100 वर्ष होइतिबो कोन का को देखले लागुतला his grandfather's portrait after watching the grandfather's portraits anybody can tell that the man whose portrait is there is at least 100 years old कम से कम 100 वर्ष होइतिबो getting me okay 100 years old he did not look the sort of person who would have a wife or children he did not look से देखा जाऊ नथिले
he did not look stand for से देखा जाऊ नथिले केमती देखा जाउथिले ए सॉर्ट ऑफ द सॉर्ट ऑफ माने प्रकार सॉर्ट कहले एठी कोन पले टाइप प्रकार द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन माने से बुढ़ा को देखिले जना माने एमती लागु नथिला कि ए लोकर केबे स्त्री थिबो ए लोकर छुआ पिले भी थिबे से एते बुढ़ा थिले से तांको देखिले लागु नथिला कि ए लोकर ओडे स्त्री थिबो कि छुआ पिला थिबे ताहले केमती देखा उतरे छे and the question arises here he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren तांको देखिले केवल जेजे बापा हवार योग्यता तांकर थिला तांको देखिले केवल लागुतला जे से जेजे बापा ही हेतिबे से बापा ही नथिबे कि स्वामी ही नथिबे हैं केवल जेजे बापा ही हेबार योग्य तांकर फोटो को देखिले ए भलिया लागुतला only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother, if I will compare my grandmother with my grandfather, जदि मो जेजेमार बयस को मो जेजे बापार बयस सहित कंपेयर करा जाए तुलना करा जाए सो एज फॉर माय ग्रैंडमदर कौन हला बीइंग यंग एंड फ्रेटी मो जेजे बापा को देखिले आ मो जेजे माँ को देखिले मो जेजे माँ जेजे बापा ठारू पूरा युवती भाया लगुला सुंदरी लगुला अट्राक्टिव लगुला से हैं इन कंपेयर क्या सहित कंपेयर कले मो जेजेमा सहित जदि आम कंपेयर करवा क्या जेजे बापा केमती लगुले जेजेमा जेजे बापा ठू बयस बहुत सान लगुले आउ सुंदरी भी लगुले ठीक सो यंग एंड फ्रेडी द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवल्टिंग एंड दिस थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवल्टिंग यही थॉट यही भावनाटा मो भितरे आंदोलित होउथला सब बेले मो मन में प्रश्न उंकी मारथिला सतरे कौन मो जेजेमा मो जेजे बापा को बाइला सतरे कौन से बाइला सतरे कौन ये बुढ़ाटे को मोर माने जेजेमा माने एबे देखिले एते सुंदर लागुची बुढ़ा केबेठू मोलानी मते देखिनी बुढ़ा को देखिले एमती लागुची एटा कोन लागिबो सो दिस आर द क्वेश्चंस दैट्स व्हाट दे आर इनसाइड द माइंड ऑफ द ऑथर She often told us of the games she used to play as a child. She often कहले प्राय often रो दुईटा pronunciation गोटे होचे often और गोटे होचे often whatever you can use whatever you are comfortable with yes or no so she often told us the games she used to play मो जेजेमा प्राय सब बेले कहे the games she used to play जो खेल सब सी खेलुथला केबे खेलुतला जेतले when she was a child जेतले छुआ थिला when she was a child I used to play as a child that seemed quite absurd and undignified and that seems कहले बड़ी seems कहले लागिबा seems कहले फील होबा कोन जिंस so that seems quite absurd and undignified absurd कहले unlogical जोटा युक्ति संगत नुह आउ अनडिग्निफाइड कहले कौन पिले जोटा कि माने नॉट अनरेस्पेक्टेबल नॉट रेस्पेक्टेबल जाकू सम्मान दिया जाय परिबो नहीं जो कथा को विश्वास को निया जाय परिबो नहीं so she often told us of games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part ताकू देखिले जेजेमा को देखिले लागु नथिला जे से केबे गेम खेलिथिबो ता जीवन रे कि कौन से गोटे गेम थी जोटा से खेली थी के on our part and we treated it like and the story that was being told my grandmother we are treating with the children are treating getting me so what happens undignified and off art and we treated it like the fables of the prophets used to tell us and we treated it से स्टोरी गुड़ा को आम केमती ट्रीट करूलु आम केमती नौलु ताकू बिले वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स कहले कौन काल्पनिक गल्प अबोलकरा कहानी शुणी उत्कल कहानी आम पढ़ी जेजेमा जेजेबापा मैंने कहती बहुत पुराना कहानी गोटे असुर थिला से असुर जीवनटा कौथि थिला गोटे दरिया थिला से दरिया भितर 7 तल पानी से भितर गोटे बाक्स से बाक्स भितर गोटे पारार पेट भितर गोटे सिंदूर फरुआ से सिंदूर फरुआ भितर गोटे महुमाछी
आउ सेठी तार जीवन अच्छी सो दिज आर व्हाट फेबल्स एम कौन कह आम काल्पनिक गल्प कल्पनार सृष्टि होता गल्प मनुष्य कल्पना करी कहूवा गल्प जहाँ आम फेबल्स बोली कहू काल्पनिक गल्प नहीं सो वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स यूज्ड टू टेल अस प्रॉफिट्स कहले सेंट साधु आग कालर साधु ऋषि मानकर जो पौराणिक गाथा सब से कहूला सी जो कथा सब कहूला से कथा सब शुणिला भाया लगुला से जो गेम कथा कहे सी खेलुवा गेम विषय कहे से केमती लगुला आमको लगुला जो पुराणा कालर माने कहानी मिथ सब जो रहे पौराणिक कहानी पौराणिक किंवदंती पुराणा कालर ऋषि मानकर कहानी शुणिला भाया आमको लगुला सो बर्तमान जीवा ये थिला जेजेमा जेजेबापा टे ब्रीफ इंट्रोडक्शन नहीं बर्तमान जीवा आम जेजेमार एपियरेंस केमती थिला हाउ वाज द एपियरेंस ऑफ द ऑथर्स ग्रैंडमदर शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फेट एंड स्लाइटली बेंट केमती थिला शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट टे गेड़ा थिला फेट टे मोटी थिला स्लाइटली बेंट टे बंका थिला गेटिंग मी सो शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट गेड़ा फैट मोटा आउ स्लाइटली बेंट बुढ़ा बुढ़ी मैंने देखी आम बाड़ी धरिकी अंटा बंके बंकी चलती नहीं सो सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फेट एंड स्लाइटली बेंट केमती थिला बिले शॉर्ट एंड फेट एंड स्लाइटली बेंट हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रिंकल्स कहले कौन बिले जो माने बयस अधिक जो दाग पड़े हैं देखी बहुत जो माने बुढ़ा बुढ़ी हो जाती चमड़ा सब भांग हो जाए that is called wrinkles so her face has been full of crisscross of wrinkles here to there सबु मुह सारा चमड़ार भांग थाए तार वार्धक्य जना पड़ुए मुहर तार अर्थ हैं एवरीवेयर एंड wrinkles running from everywhere to everywhere प्रत्येक कोण प्रत्येक कोण को एठू एठिकी प्रत्येक जगह तार wrinkles थाए ठीक running from everywhere to everywhere no we are certain she had always been as we had everywhere to everywhere no so we are certain she had always been as we had known her and she had always been as we had known her से मु जेते दिन जानी से जेमती देखा जाउथुला सेमती ही थिला मु कोन मो बापा भी कहंती जे मो मां एमती ही थिला so she had always been there like that ओल्ड केमती थिला ओल्ड वृद्धा सो टेरिबली ओल्ड माने कौन कह माने बहुत वृद्ध वृद्ध तो नुह बहुत टेरिबली ओल्ड टेरिबली कहले आम जानी टेरिबली कहले भयंकर दैट मेक्स अस सेपरेट बट हियर टेरिबली ओल्ड मीन्स ओल्ड पर गोटे एडजेक्टिव आउ गोटे लगी ओल्ड एडजेक्टिव अनदर एडजेक्टिव इज बीइंग यूज्ड हियर हैं so terribly old that she could not have grown older माने एते बुढ़ी हो जाइथिला जे से आउ बुढ़ी हो नथिला तार बयस एते बढ़ी जाइथिला जे ता बयस आउ बढ़ू ही नथिला जोठी रहिथिला सेठी रहि जाइथिला शी कुड नॉट हैव बीन ग्रोन ओल्डर आउ बुढ़ी हो नथिला एंड हैड स्टेड एवं से बयस रे हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years विगत 20 वर्ष है had stayed at the same age से जगार सेमती ही कौन सी परिवर्तन बिना से जगार से रही माने तार बयस सते माने 20 वर्ष तले जी देखी आज जी देखुची दुई जन माने से समान लोक कहती नहीं तुम कुआड़ गोटे आसिले अरे तोर भितर किसी परिवर्तन ही नहीं तोते गत वर्ष देखी तू जमी अच्छु एवं भी सेमती अच्छु से भाया कथा Okay, 20 years. She could have never, been pretty, but she was always beautiful. Huh? She could have never been pretty, but she was beautiful. So, pretty कहले कौन attractive, without beautifulness. माने सुंदर नुह किंतु आकर्षणीय. She could never have been pretty, but she was beautiful. तथापि से सुंदर थिला. ताकू देखिले माने गोटे मनर जो उत्कंठा जात हुए बहुत सुंदर बोली आम जो प्रशंसा करूँ से भाया हो नाला कि देखिले भल लगुला सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी बट सी वाज ब्यूटीफुल किंतु से सुंदर थिला ताकू देखिले गोटे निजको शांति मिलुला सैटिस्फाइंग लगुला नहीं सो
She was beautiful, always beautiful, okay. Always beautiful. She hobbled about the house in spotless white. She hobbled about the house. Hobbled about कहले कौन पिले hobbled about कहले ए जगह से जगह माने बटरफ्लाई सो टू मूव लाइक ए बटरफ्लाई प्रजापति जेमती एठू ए फुलरु से फुल बोले लाइक दैट इज कॉल्ड hobbled about कहले कौन here to move here and there to wander here and there without any aim without any destination getting me. So yes, she hobbled about the house in spotless white कहले कौन पूरा धड़ा आम जाचे जेजे बापा तो नहांती से विधवा हो जाइए आम हिंदू धर्म हिंदू परंपरा अनुसार विधवा है नॉर्मली स्त्री माने धड़ा लुगा पिंधती सो स्पॉटलेस व्हाइट से तो गोरा लोक एक गोरा द्वितीय धड़ा लुगा माने देखिले पूरा गोटे माने दाग नथिबा धड़ा अवतार भाया से देखा जाउतला. सो हबल्ड अबाउट इन स्पॉटलेस व्हाइट with one hand resting on her waist to balance a stoop. With one hand resting over waist to balance a stoop. तो गोटे हाथ कौन कर अंटारे पे कौन करने देखी बुढ़ा बुढ़ी मैंने जो चलती नई चलती अंटारे हाथ देता कहीं कारण मेरुदंडटा धीरे धीरे दुर्बल होता है तो बैलेंस करने टू बैलेंस देयर एज टू बैलेंस देयर वर्क दे हैड टू कीप देयर हैंड ऑन देयर वेस्ट नहीं. सो स्टूप कहले जो कौन पहले हर स्टूप कहले बेंटनेस रेस्टिंग कहले गोटे हाथ रखिबारे माँ रेस्टिंग कहले ये आश्रय नवा बा गोटे हाथ रखा ये. सो रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस स्टूप कहले तार जो बेंटनेस थिला तार अंटा जो बंका ही जाउतला ताकू बैलेंस करबा पई से गोटे हाथ दउतला कोठी अंटारे हैं बैलेंस स्टूप and the other telling the beads of a rosary and other hands आउ गोटे हाथ रे कौन करथला telling the beads of a rosary हरे कृष्ण देखी दिवा बुढ़ा बुढ़ी माने गोटे माने मुना पकई थिबे एठी आउ डाहाना हाथ रे जपुथ हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण लाइक दैट गेटिंग मी. सो से कौन करथला गोटे धार्मिक महिला थिला बोली एठू प्रमाणित होउची से सब बेले भगवानकर नाम जप करथला गोटे जप मुणा धरिक टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजारी कहले जप माल रे लगी माल सबको बीड्स बोली कहूचे आ रोजारी कहले माल बीड्स कहले जो माल रे लगी कौन कह कौन कहती गोटे गोटे बीड्स ताको तुम जहाँ कह पार व्हाट एवर लैंग्वेज आई डोंट नो व्हाट इज द ओडिया एक्जाक्टली दैट माल तो कहूचे आम माल. So her waist to balance a stoop and the other telling the beads of her rosary. Other telling the beads of आउ गोटे हाथ रे कौन करता गोटे हाथ it was on her waist to balance a stoop and other ends telling the beads of her rosary. Okay, next. Her silver locks. It is silver locks बोली कहा को कहते locks कहले हम जानती बा लट जहाँ को जो हिंदी रे जो केराए चुटी हैं silver locks. तार एठी ता मुंडर चुटी को कहते silver locks कही की माने कहीं की को silver कहीं को अगला because धड़ा ही पूरा चुटी पाची गलानी धड़ा ही. सो हर सिल्वर लॉक्स विथ स्कैटर्ड कहले इतस्तत भाव पड़ा ता मुह सारा पड़ी कौन ता चुटी इतस्तत भाव स्कैटर्ड अनटाइडली इतस्तत भाव स्कैटर्ड अनटाइडली हैं किसी लोग टाइडली माने से माने जानी जानी स्टाइल दैट इज कॉल्ड टाइडली हैं but untidily, so unknowingly, untidily, the scattered hair was scattered around her face. Untidily, over her pale, fucked face. Pale कहले फिका देखा जाउथवा मुह fucked कोटरा आगत माने चमड़ा पसी जाइथवा जो खाल हो जाइथवा जमती कोटरा आगत puckered face and her lips तार ओठो her lips constantly moved निरंतर भाव चलुला हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण. सो कंस्टेंटली मूव्ड कौन होता इन अडिबल प्रेयर जो प्रार्थना कि आमको शुणा जाऊ नथिला से सब बेले किछि पढुथला किछि कहूथला प्रेयर करूथला प्रार्थना करूथला बट से प्रार्थनाटा आमे सुनी पारू नथिले. इनअडिबल प्रेयर. यस शी वाज ब्यूटीफुल. यस the author is telling yes she was beautiful, no doubt she was beautiful. So बहुत सुंदर थिला किए she was beautiful हैं
She was like the winter landscape. She was just like the winter landscape in the mountains. ଶୀତ ଦିନେ ବରଫାବୃତ ପାହାଡ଼ ଯେମିତି ଧଳା ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ମନରେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ. She was like the winter landscape in the mountain. ବରଫାବୃତ ପାହାଡ଼ର ଶୁଭ୍ରତା ତା ଦେହରେ ଥିଲା, ଶାନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଥିଲା. An expense of pure white serenity. An expense ସତେ କି ତା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିଲା calmness. serenity କହିଲେ calmness, ଶାନ୍ତି. ସେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା. ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା. ସେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା କିଏ? ମୋ ଜେଜେମା. So pure white serenity, expense of pure white serenity, breathing peace and contentment. Peace କହିଲେ ଶାନ୍ତି. ତାର ନିଶ୍ୱାସରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା. ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମଣିଷ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଥିଲା. ବ୍ରିଦିଂ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ. କଣ୍ଟେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ ପିଲେ? ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍. CONTENTMENT. କଣ୍ଟେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍. ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଥିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଟିକେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼ ହେଇଯାଉ. ତ ମୋ ଜେଜେମାକୁ ଦେଖିଲେ ସେଭଳିଆ ମନକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଥିଲା, ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମିଳୁଥିଲା, ସନ୍ତୋଷ ମିଳୁଥିଲା. ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍. ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲେ. ବାକି ଯାହା ରହିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ୟୁନିଟ୍ ପଢ଼ିବା. ଠିକ୍ ଅଛି. ଆଉ ଏଇ ସଣ୍ଡେରୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା. ଏଇ ସଣ୍ଡେ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ହେବ MIL ଓଡ଼ିଆର ପରୀକ୍ଷା. MIL ଓଡ଼ିଆର 1 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଦେବି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଅଛି. 3ଟା ବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା. ଓକେ. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ. ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ. ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିବା ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲାସେସ୍. କ୍ଲାସେସ୍ ୱିଲ୍ ବି ରେଗୁଲାରଲି ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ରେଗୁଲାରଲି. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ.